Assalamualaikum जी, this is Umer Khan और EO join तो मैंने इसी साल किया है, but I have had the pleasure of being a partner of EO for the past 10 years almost. It has been a beautiful journey. I have been asked to join. मैं हमेशा कह रहा था यार, okay, being on the other side has its own perks, so let me be on the other side. But I realized when I joined this year that being on this side is extra special. I am an engineer by education. I'm also an MBA from Virginia Tech, or I run a couple of businesses. One is a marketing services company called Event Events. We do a lot of corporate events. We have a private event division as well. मेरा अपना टाइम बहुत ज्यादा जो है वो कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग में लगता है. The initiative that is called Activate, or we work a lot on strategy, leadership, building capabilities for organizations and teams, and it has been a beautiful journey doing that. Recently, I have also adapted to the startup called Activate Games. It's a learning, game-based learning के ऊपर. We have a few simulations and few platforms, and that's what's exciting me these days. My name is Bilal Ejaz. I joined EO back in 2007 in Karachi. I used to live over there. There was EO Pakistan chapter which was functional in Lahore. Me and few of my friends started EO in Karachi and we joined that chapter. I'm director in Diamond Group of Industries. I joined my dad's business back in 1998. All right, Bilal, that's wonderful to know. As one of the few who started EOs and someone who's just joined, I think what a wonderful way to get to know each other. So I think पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि as a child, what was your favorite game or hobby and why? And does it still influence you in some way today? हाँ जी बिल्कुल. माय फेवरेट गेम वाज क्रिकेट बैक इन 1991. उस वक्त तक तो इतना शौक नहीं था मुझे, लेकिन पूरा मेरा स्कूल जब वर्ल्ड कप हो रहा था 91-92, आई बिलीव उस वक्त पूरा स्कूल जो है वो सब परेशान थे, देख रहे थे. अब हमारी उस वक्त एजेस, आई वाज ओनली 10 और 11. उसके बाद से मेरे को क्रिकेट में दिलचस्पी बनी जो अभी तक चल रही है, एंड मेरी फेवरेट गेम अभी तक भी क्रिकेट है. Bilal bhai, मेरा भी frankly cricket is what kept me going all those early years. और मैं बहुत मुश्किल से उठता हूँ, लेट उठता हूँ और किसी भी काम के लिए. लेकिन one thing my family would always catch me doing would be कि सुबह 4 बजे भी अगर कोई टीवी लगा हुआ है और कोई मैच हो रहा है तो पता चल जाएगा कि कोई मैच हो रहा है. Romer was up watching that match. I used to play a lot of cricket as well. I was hit by a hard ball early in my school years in my face, so that delayed that kind of stopped how much of hardball cricket I would play for a while, but then I went back at it. I think absolutely those hours practicing, playing in the sun, it has shaped me in many ways. As a hardcore team sport, I was considered as somebody who was always cheering the team up. I felt that more than just my contribution with the bat, wherever I was in the game, I needed to make an impact. And I think that has what has defined me personally over the years. Whenever I get involved, I need to make an impact. So yeah, cricket has definitely shaped me. Bilal bhai, you must have made multiple decisions in your life. तो मुझे ये बताएं कि single best decision कौन सा था आपकी जिंदगी का, और how has it shaped your journey so far? You can say toughest was to join my dad's business. Back in 98, my dad was parliamentarian and too busy in politics, so business was totally avoided. So 98 में उन्होंने decision लिया. I used to study in USA. तो मैं half अपनी education छोड़ के I came back, joined my father's business, and in that journey I have good learning, good experience, especially with my competitor. I was in California studying, तो मेरा दिल था कि एटलीस्ट आई कंप्लीट एंड डू एमबीए. उसमें मेरे को शायद 3 साल और लग जाते, टोटल ग्रेजुएशन प्लस एमबीए करके मैं आऊं. लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि मुझे फिर आना पड़ा क्योंकि माय फैमिली वाज नेग्लेक्टिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, क्योंकि उधर रहना तो इस्लामाबाद ही पड़ता है. तो दैट्स व्हाई आई केम बैक. Sir, while I ask you this question, I've been thinking कि मैं इसका जवाब खुद कैसे दूंगा. और there are so many different decisions that I have taken that have shaped me. Which one is the best? I don't know. I mean, आप hindsight में सोच रहे हैं ना कि शायद जो आपको उस वक्त बेस्ट लग रहा था बाद में वो कैसा रहा. But the good thing is कि मैं बहुत ज्यादा hindsight में सोचता नहीं. I do evaluate how my actions were, but I don't really think too much. So I thought that
one decision that truly shaped me was my decision to leave a very stable job that I was doing with Engro, early in my career, one of the youngest, in fact, the youngest team member at Engro. I had quite a life as a young professional who comes from a middle class family would dream to have. लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा urge थी कि I needed to do something of my own, I needed to put myself into a situation that would stretch me और मैंने सोचता ये था कि मैं पाकिस्तान में तो MBAs वगैरह सबके साथ ही काम कर रहा हूँ जो लम्स के MBA का रोल है वही मेरा एज एन इंजीनियर फ्रॉम GI के ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ so I wanted to go abroad and do my MBA. I had no clue what will that lead me into. I didn't even think what are the best universities to go to because financial issues were the main decision maker for me. Okay, how will I manage that? So I researched. I opted to take to join Virginia Tech when I got admitted there. So my decision to leave a very stable life and pursue an MBA degree, which I wasn't even sure that if I have the finances to do it, all I had was a one semester fee which I could afford at that time and I left for it. और वो जो 2 साल है that shaped me because मुझे लगता है कि the entrepreneur in me whereas the dream was there I felt कि I truly started believing. जब मैं वहां पे गया था तो माय डैड हैड टोल्ड मी कि भाई तुम जा रहे हो बस तुम्हें इलीगल नहीं होना अगर पैसे नहीं होंगे तो यू कम बैक so coming back was never an option in my mind. So when I went there, I had a strategy guided and mentored by some of the best I knew at that time कि आपने कैसे लोगों से मिलना है. I remember मैं अमेरिका जाते हुए हमें 232 kg के बैग अलाउ होते थे तो मैंने एक 32 kg का बैग पूरा भरा ऑफ सोवेनियर्स एंड गिफ्ट्स which I took from Punjab Small Industries Handicraft Shop. और Javed Sheikh Saab, Allah Majallaf receive करे, was the vice principal of GC. He mentored me through that process and he said, Umer, you need to make connections as early in the game as possible. So even before my classes had started, I had made sure that I had met every single professor there and had exchanged some kind of a souvenir with them, very small, so that it doesn't appear too much to them either, but it also was a good gesture. And I can safely say that I had connections with every single person in my MBA program even before the MBA started. Or I think that kind of hustle helped me get my scholarship in my first semester. That helped me do my 2 year MBA program. I came back to Pakistan with more money that I had left with. And in this engineer choosing to do a MBA degree, whereas all the scholarships were available in the engineering side of academics, I think that kind of an experience shaped me in believing if you truly believe in something, you can make that happen. It was very emotional. It was a lot of stress at times. I think everything that an entrepreneur goes through. So I think that decision to take the leap of faith without having the resources in place has certainly shaped me to become who I am. Bilal bhai, with all the success that you have had in your life so far, what is one thing that you have always wished if this talent was magically granted to you, what would it be and how would you use it in your personal or professional life? देखिए ड्रीम टैलेंट यू कैन से मेन थिंग अगर आप बिजनेस में हो जिस चीज में हो यू हैव टू बी ऑनेस्ट तो ऑनेस्टी जो है वो इज गुड एंड आई वुड नो अबाउट अदर्स ऑल्सो कि वो लोग भी ऑनेस्ट हों और आपसे ऑनेस्टी से डील करें तभी आपकी कारवां आगे इस मुल्क का चलेगा ऑनेस्टी हो तो सही है बिल्कुल Sir, आपकी जो whatever you're saying is coming straight from the heart and I'm inspired. I think that's पता चल रहा है कि that has been the reason of your success. Uh, Absolutely honesty is important and the way you say it, I think that shows that this is your driving value that has driven you throughout. मुझे जी I've always had a lot of I would like to believe that I always had a lot of raw talent in अगर मैंने debates की जिंदगी में तो I didn't have to work that hard. I thought I could and I did it. जो भी काम किया है so उसी उसी टैलेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहे और वो बड़ा अच्छा रहा but I thought one thing that I lacked and I tell my eldest daughter, yeah, I wish I had 20% of her discipline, so maybe I would have conquered the world. Or I think so. One thing that I would like to have is discipline. In all what you have achieved, Viralji, over the years, what have been your biggest success in business? Or
Why do you feel? What is the significance of that, and what were your learning? मेरा सबसे बड़ा जो सक्सेस था जब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था बैक इन कराची। अब सबसे पहले प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किया। स्क्रैच मींस के सारी चीजें मुझे डिसाइड करनी थी, क्योंकि मेरे जो भी कजन्स एंड पार्टनर्स थे वो थे लाहौर में, तो वो बिजी थे, उनसे ना कोई सिर्फ गाइडेंस सही मिली ना कुछ हुआ। बैंकों से आपने खुद बात करनी है, उसमें मुझे बड़ी लर्निंग हुई। अचीवमेंट्स मैंने की। मशीनरी सप्लायर्स, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही जरा इन्वॉल्व हो रहा था ना, रिस्क था उसमें कि पता नहीं मैं गलत मशीन खरीद लूं, सब क्या कहेंगे। इस चीज से काफी लर्निंग हुई। साथ साथ फिर आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है कि महीना हो गया, प्रोडक्शन हो रही है, माल तो बिक ही नहीं रहा, अब नेक्स्ट क्या। अब माल बिकना शुरू हुआ तो पता चला कोई ना कोई मशीन खराब क्वालिटी दे रही है, सारी चेन खराब हो रही है। इस किस्म की प्रॉब्लम से मैंने उस टाइम में बहुत कुछ सीखा था। तो ये था मेरा, एंड फर्दर गोज ऑन। मेरे लिए, I don't know if I can say I've had any success in business which was big enough for me to claim it. I think it has been a journey of a lot of small successes. Really, if I think about it, so I think every first has been important. The first time as a 25-year-old, I was tasked and I got the opportunity to train leaders of a big MNC. That was huge. The first export order or first international client I got for my latest game-based startup, that was huge. The first big breakthrough I made with PepsiCo for my event company uh, as their trade marketing partner, I thought that shaped us up and gave us the team. So yeah, I would like to believe, जैसे मैंने अपनी MBA वाली स्टोरी बताई थी कि आई एम somebody जो एक एक्सपीरियंस है उससे बहुत ज्यादा चेरिश करता हूँ और वो आपको नेक्स्ट चीज के लिए तैयार करता है. So all the firsts in my life have always been important, and once that has happened, it has given me belief that I can do anything. What is your all-time favorite movie, book, or piece of art, and how has it influenced your life or your business philosophy? Once again, बहुत सी छोटी चीजों ने मुझे बहुत सी चीजों ने शेप किया है. तो कोई एक चीज which shaped me completely or the biggest is difficult. That's been the story of my life. I'm a sum of a lot of small experiences, just like many, all of us, I would say. लेकिन आई थिंक मूवी तो एक बचपन में एक मूवी होती थी जी. सम ऑफ यू मे हैव सीन दैट. इट वाज स्टैंड बाय मी, आई बिलीव उसका नाम है. इट वाज अ स्टोरी ऑफ फोर फ्रेंड्स. सो मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों की बहुत इम्पोर्टेंस रही है, बोथ इन हाउ आई कंसिडर देम एंड हाउ दे हैव शेप्ड मी. और वो हमने स्कूल के जमाने में वो मूवी देखते होते थे मिलके, and we had always dreamt that that gang would remain, and it has till now, alhamdulillah. So, so yeah, that movie certainly had a lot of impact. जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो some, I was exploring how to be a consultant trainer, or so I met somebody at LAMS and I was referred a book, Joseph Jaworski, he's the founder of American Leadership Forum, और उनकी किताब है Synchronicity. I felt कि उस किताब के जो आइडियोलॉजी थी या जो उसकी स्टोरी थी, that resonated really well with me, and it helped me shape a lot of my uh, a lot of my belief system. One book that in the past decade has truly helped me is Imran Khan's Pakistan. I thought that I got connected to him after reading that book. Many would claim कि उसने शायद खुद भी ना लिखी हो, but I don't know. I would like to believe that he's the man behind those words. And I truly felt that somebody who thought like that would be the right person that he needed. And I think that Imran Khan's Pakistan certainly shaped me because my journey in life of the past 10 years has been around him in many ways, my belief system. So I think that book certainly played also a huge role.
मेरी फेवरेट मूवी थी जिना। ख्याल से अराउंड 20 years अगो जिना मूवी आई थी। द बेस्ट चीज उस मूवी की जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ कि एक आदमी आया पाकिस्तान, इस इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में आके उसने ये नहीं बोला कि मुझे कोई बिजनेस बनाना है, ये बनाना है। उसने आके बोला मुझे एक मुल्क बनाना है। उसकी सोच देखो कि मतलब हम क्या सोचते हैं, दुकान बनानी है, रेस्टोरेंट बनाना है। वो आया कि मुझे मुस्लिम्स के लिए एक अलग मुल्क बनाना है। उसके लिए उस पूरी मूवी में दिखाया है जो उसकी मेहनत, उसके काम, टाइम टेकन। अगर वो किसी मौके पे गिव अप करके स्टेप बैक हो जाता तो आज हम पाकिस्तान में बैठे ना होते और पाकिस्तानी नहीं कहलाते। लेकिन वो कितने डेकेड तक लगा रहा, लड़ता रहा और आखिरकार उसने अपना ड्रीम पाकिस्तान पूरा किया। इसलिए दैट्स माय फेवरेट मूवी। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर जिंदगी के किसी वजह से, फॉर एनीथिंग दैट हैज हैपेंड, यू एंड अप बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और आपने दो लोग अपने साथ चुने हैं, जिंदा मुर्दा, मतलब ऑब्वियसली साथ तो आपके वो जिंदा ही होंगे, बट फ्रॉम द पीपल यू न्यू, लिविंग और डिसीज, हु वुड दे बी एंड व्हाई? इस बारे में मैंने काफी सोचा है। पहले भी ये सवाल मेरे से हो चुके हैं काफी सालों से। काफी सोच सोच के फाइनल मैंने ये ही डिसाइड किया, अगर कभी ऐसा मौका आए, आई रादर बी अलोन विथ फ्यू बुक्स। व्हाई शुड आई टेक एनीवन? ये बात में ही एक बहुत बड़ी गहराई है। आप लोग इस पे सोचें, फिर किसी वक्त आपसे इस पे बात करेंगे। So interestingly, I will have to agree with you, Bilal, on this. So I don't know, अगर if I get stranded on this deserted island, मैं चाहूँ कि कोई और मेरे साथ जरूरी साथ आए, और मैं दोस्त को या किसी भी जानने वाले को जरूरी करूँ. I would wish that nobody is there with me. That's what I would like to believe. लेकिन trust me, just the thought of being deserted on that island alone, that's really scary. So अगर ऐसा होना ही हुआ तो फिर यार maybe a couple of my friends, I can pick any two from this gang that I have, and I think they would do. I think हम एक दूसरे को sane रखने में काफी help करेंगे, और maybe we can push each other to find a solution to get out of it. But yeah, while I will want while I would wish nobody that, desertion on that island, but I think अगर मुझे रहना हो तो I would prefer to be with two of my friends. If someone were to write a biography about you, what would the title be and why? कोई बहुत वेला ही होगा जो मेरे ऊपर बायोग्राफी लिखना चाहेगा, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई हैव डन एनीथिंग so far, but I think the title could be a flawed man with big dreams. I think my struggle or my achievements are nothing in compared with what my dreams have been. But well, picture abhi baki hai, God knows kitni, and let's see what is to be achieved in that time, inshallah. मेरा होगा कि कोई लिखेगा ना, मैन ऑलवेज स्माइलिंग इन एनी सिचुएशन। ये वाली मेरी बुक का टाइटल होगा। वाई? क्योंकि मैं हर सिचुएशन में हर किसी के साथ इंटरेक्ट करा के, कोई मातम वाला माहौल हो, कोई परेशानी वाला माहौल हो, उसको पूरा चेंज करके सबको स्माइलिंग सिचुएशन में ले आता हूँ। इवन एक दो बोर्ड्स में भी मैं था, वहाँ भी लोग मुझे यही कह रहे थे, सख्त मीटिंग हो कैसी भी हो, उसको चेंज करके उसको एकदम कंफर्टेबल माहौल में ला। इस वजह से मेरा होगा मैन ऑलवेज स्माइलिंग। So Bilal, we at EO know you as an amazing person who's always smiling and who's always adding value. But वो ऐसी क्या ऐसा fact है आपके मतलब, what most people would be surprised to know, या फिर they wouldn't typically guess about you? देखें, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स, मेरी सिचुएशन ये है कि आई कैन कन्वेंस नॉट एवरी वन बट एनी वन। इन दो वर्ड्स में जरा सा डिफरेंस है कि आई कैन कन्वेंस मोस्ट ऑफ द पीपल के उनसे किसी भी सूरत हाल में कुछ भी करवा लेता हूँ। ये एक सीक्रेट भी है और साथ साथ अपना एक क्वालिटी भी कह लें है, जो बिजनेस में भी आपको बड़ी काम आती है। जैसे आप बताएं अपना। So I don't know. I mean, I am very adaptable, so different groups of people know would find me very different from them. So I think कोई भी एक ग्रुप जो मेरी एक साइड को जानता है वो मुझे किसी दूसरी साइड पे देखता है तो शायद उनको थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट एक चीज सबको ही पता है दैट आई गिव इट माय ऑल. सो कभी कोई फेक नहीं करना पड़ता, नेचुरली पीपल नो इट, बट आई थिंक
if somebody is to know, is to ever find out, जो मेरी close family के अलावा शायद लोग नहीं जानते होंगे, is how I am with my own kids and family today, that would surprise them. I think I am the goofiest person around. वो जो एक Inside Out movie थी उसमें एक goofy planet था, तो I think that's वहां पे रहता हूँ मैं बहुत ज्यादा, and I think I am a source of huge embarrassment for my kids in front of their friends. एंड आई थिंक मेरे जो बहुत से कुलीग्स हैं वो जानेंगे ये चीज देखेंगे तो पता चले तो शायद सरप्राइज होगी, especially the people I consult or train with. What is something in business that you wish you were better, and how are you working to improve that skill or aspect? I think मेरे लिए तो मैंने पहले भी मेंशन किया था, the only thing that I would like to improve is discipline. I think अगर I can become more disciplined in how I view results and objectives, how I interact with my team, uh, I get very excited. I work in spurts. I will get very excited about something and I will put a lot of energy. I can pull 48 hours में ऐसे ऐसे काम which people find it impossible to do. Uh, I guess that's what defines me as well pretty much. लेकिन मेरे ख्याल में यही वो वजह है जो a lot of what I can, this works very well when I work in my consulting capacity, because जब आप दूसरों के साथ काम कर रहे होते हो तो I am able to give them 1000% in those engagement hours that I have with them. Uh, लेकिन मेरी अपनी बिजनेस ग्रोथ में मुझे शायद ये चीज हिंडर करती है, because that lack of discipline impacts. So I think I really wish I had a better discipline. I always wanted or want to work professionally. एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में मेरा हमेशा से दिल है कि मैं काम करूं, और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूं कि मेरा स्टाफ ऑफिस का या फैक्ट्री का स्टाफ वो भी प्रोफेशनल तरीके से काम करे। उसी में फायदा है और उसी के अलावा फिर काम में इतना मजा नहीं आता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग भी इम्प्रूव करें, मैं अगर नहीं कर सक रहा तो मैं भी करूं, मेरी बोर्ड भी करे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उसमें चैलेंज तो हर चीज में ही हर वक्त हो रहा होता है, और यहाँ पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, जरा थोड़ा वक्त पे आपकी ईमेल रिप्लाई नहीं करना, क्लेम करना भूल गया ये वो, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो जरा अभी कंफर्टेबल है नहीं थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करने में। ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। आई डोंट नो शायद इंडिया में भी हो, लेकिन सुना नहीं इंडियन से आप डील करें या किसी टर्किश ईरानी से भी कर लें, वो पाकिस्तानियों के तरीकों से बहुत बेहतर है। ये एक प्रॉब्लम है। बिलाल जी, वैसे तो मुझे I would like to believe that you already have all the money in the world. लेकिन if you were to have all the money in the world, what would you do with it? The only thing I can do, क्योंकि ऑल द मनी इन द वर्ल्ड हो के मैं अपने सारे शौक ये वो जो भी हैं वो तो पूरे हो गए, लेकिन मेन थिंग जो मैंने सोचा वह देयर विल बी नो वॉर इन द वर्ल्ड, नो हेल्थ इशू पूरी दुनिया में, नो जॉब इशू, और सबसे पहला नंबर तो पाकिस्तान का आएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान को ठीक करना है, क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ बहुत ही ज्यादा है। आप बताएं, इफ यू हैव ऑल द मनी क्या करेंगे अपने ड्रीम्स पूरे? I think, well, I love the giving aspect of you, sir, and I think what you're saying is inspiring. Uh, to be truthful, I feel अगर मेरी बात करेंगे तो I will like to travel the world, uh, take people who matter the most with me. I think I would like to spend a lot of my time being able to travel wherever I want to travel. लेकिन विदाउट पर्पस मेरी जिंदगी कभी मैं एंजॉय नहीं कर पाता, तो विद ऑल दैट ट्रैवल आई वुड आइदर नीड टू फाइंड अ पर्पस व्हिच विल हेल्प द वर्ल्ड। मुझे जो आई थिंक एक चीज तंग करती है वो द लैक ऑफ एजुकेशन और द अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ साथ आई थिंक इवन जो लॉलेसनेस और इनजस्टिस है। लेकिन आई थिंक इफ वी कैन रियली ट्रूली एजुकेट द वर्ल्ड, दैट कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। सो आई वुड लव टू ट्रैवल ऑन अ पर्सनल नोट anywhere and everywhere, and I would love to spend most of my money in helping people pursue the kind of learning they want to pursue. Could you share three personal traits or habits that you believe have played a big role in your business success? So, मैं तो जी, I think I can count the three which define me. I hope they have helped me in my business, whatever little success I've had. But the first, I don't say no, and I don't like to hear no for.
I would like to always believe that anything is possible. And until and unless you have exhausted all that you have, then you start talking about whether it can, there is a possibility to find an alternate. So I believe that's one. Two, because I believe in that, everything I do it with my heart on my palm, like with all the passion that I have. So I give it everything. If I get excited about something, then I give it absolutely everything. And तीसरी चीज I like to take people along. मेरे लिए success is very much dependent upon if it is a mutual success, or the definition or the milestones for me could be numbers and objectives, but they're very much if that success is shared by the people who play any role in that. So taking people along is, to me, is the key. देखिए, मेरा जो पास्ट वगैरह गुजरा है उसमें एक चीज तो पक्की है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। तब आप लॉन्ग वे जो भी चलाएंगे सिस्टम वो ठीक चलेगा। नो मिस कमिटमेंट, बी ऑलवेज ओपन एंड लिबरल। ये मेरी कोट्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से आप अपना चलाएं और एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला भी आपके साथ उसी तरीके से चले। Bilal, आपसे बात करके तो what I feel is that, mashallah, you have so much to give, and, you've been able to have control of your life, or that's what is important. I think that you have a great balance. The same thoughts, how do you, I'm sure that you manage it really well, the balance between your work and personal life, but how do you strike it? Any कोई specific strategy or practices हैं जो आप useful, जो आपके लिए helpful है? जो एज मच टाइम आई स्पेंड इन बिजनेस, ऑलमोस्ट उतना नहीं तो उससे थोड़ा ज्यादा ही मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। वो इस तरीके से, और जो मेरा बिल्कुल ही एक रूटीन बनी हुई है, मंडे टू फ्राइडे 1.5 आवर के लिए मैं जिम जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक उसमें से 40-50 मिनट वर्कआउट वगैरह किया, बाकी टाइम जिम में ही रहा, थोड़ा समझ रहे हैं ना, ये मैं हमेशा करता हूँ। और मेन चीज, आई यूजली टेक कपल ऑफ वेकेशन विद फैमिली, एंड स्पेशली एक आध मैं सिर्फ मियाँ बीवी के साथ भी करता हूँ कि हर चीज मेरी बैलेंस है। वरना फिर अगर इनमें से कोई भी चीज खराब होती है ना, तो पूरी, या तो फैमिली का एटमोस्फेयर खराब हो जाएगा, बिजनेस में कम टाइम दो तो बिजनेस वैसे ही आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर मैनेज करता हूँ। आप अपना बताएं, हाउ डू यू मैनेज और टैकल? So मैंने तो जैसे आपको कहा ना कि I'm inspired by how you are able to take control of your life and spend your energies in things which matter, and also as work-life balance. I struggle in that. I struggle in that because I get very passionate about things, and when I get passionate about things, तो वो चीज मुझे absorb कर लेती है. Uh, I am also I've always been known in my family as somebody जिसके अराउंड बहुत सी चीजें सर्कल करती थी, बहुत से इनिशिएटिव वो करता था। तो वो होते हैं ना फैमिली में कि आपके घर कोई आए ना आए, लेकिन अगर आप किसी के घर जाने से कभी लेट हो जाओ तो यू आर ऑलवेज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज बाकियों से तो एक्सपेक्ट नहीं होता लेकिन आपसे एक्सपेक्ट होता है। तो आई एम दैट पर्सन। तो टाइम आई फेल्ट के दैट प्रेशर, which is a beautiful pressure to have, of expectations. There are so many people who expect that you will give uh, time, who matter to you. But I think I struggle with that. I think over time, jitne log who have played such an important part in my life, जो deserve करते हैं, या जो वो नहीं करते बल्कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है कि मैं उनके लिए टाइम निकालूं। मैं कई दफा मुश्किल हो जाता है अपना टाइम निकालना, और इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस अगेन मेरे लैक ऑफ डिसिप्लिन से थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज आई टेक अ लॉट ऑफ वेकेशंस माई सेल्फ, समटाइम्स विद माई फ्रेंड्स, समटाइम्स विद माई फैमिली, इवन विद माई वर्क टीम, एंड आई लाइक, वो बहुत आपको रीसेट करने में हेल्प करता है। आई लाइक टू डू थिंग्स विद माई इमीडिएट फैमिली। मुझे खुद को डिसिप्लिन करने की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सो दैट हैजंट वर्क दैट वेल. But I think it's a struggle because with somebody like me, वो बहुत सी चीजें करना चाहता है, और जो भी चीज जिस मोमेंट में कर रहा हो उसमें वो बहुत पैशनेटली उसको डिलीवर करते हैं। तो आई थिंक इसके साथ इनहेरेंटली कुछ इम्बैलेंस कभी ना कभार चीजों में क्रिएट होता है। बट आई थिंक आई हैव ओन्ड अप टू दैट।
I believe that this is how things will be. I just think that I need to do a better balancing act of ensuring that I keep managing to find those slots for giving it to the people who matter to me and who are important. This has certainly been fun doing, Bilal, and we've met so many times while I was a partner, a facilitator for EO, and then on the EO's platform as well. But we've never really had a chance to get to know each other this way. Pleasure and honor for me to be able to have this discussion आपके साथ. Once again, thanks to the team, Dr. Vikas and Ali, and the EO board who has made this happen possible.